रिक्वायरमेंट क्यों है और बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सर, जब कॉमनवेल्थ गेम पिछला हुआ 2010 में भारत में, तो उससे पहले रूल्स बने और एनडीटीएल को भी यहाँ पे बनाने का काम किया गया। लेकिन कुछ वर्ष पहले सर हमारी जो लैब है उसको सस्पेंड कर दिया गया था, उसकी रिवोक भी हमने पिछले की, उसके मैं विस्तार में बाद में आऊँगा सर। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि इसके सैलेंट फीचर्स हमारे बिल के हैं क्या, उस पर मैं थोड़ा प्रकाश जरूर डालूंगा। सर, द प्रपोज बिल इंटेंड्स टू अकम्प्लिश building institutional capabilities in anti-doping and enabling hosting of major sporting events, protecting rights of all sports persons, ensuring time-bound justice to athletes, enhancing cooperation among agencies in fighting doping in sports, reinforcing India's commitment to international obligations for clean sports, independent mechanism for anti-doping adjudication, providing legal sanctity to anti-doping agency, which we generally call NADA, and NDTL, which is National Dope Testing Laboratory, establishing more dope testing labs, creating job opportunities both directly and indirectly, and creating opportunities for academic research, science and manufacturing relating to the anti-doping. कुल मिला के सर इससे खेल और खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि सर अगर कोई भी व्यक्ति डोप करता है और वो पाया जाता है टेस्ट में, ना केवल उसकी भागीदारी खत्म हो जाती है बल्कि साथ ही साथ हमारे एक मेडल जीतने की संख्या भी उस दृष्टि से कम हो जाती है। तो इसके बारे में जागरूकता भी बढ़े, टेस्टिंग भी हो, सुविधाएं भी बढ़े, तो खेल और खिलाड़ियों के हित में आज इस बिल को लाया गया है। मैं आशा करता हूं इस पर सकारात्मक चर्चा होगी और जो भी विषय इसके बीच में आएंगे उसका विस्तार में बाद में उत्तर दूंगा। आपका धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। मोशन मूव्ड। There is one amendment by Dr. John Britas for reference of the National Anti-Doping Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move the amendment at this stage without any speech. You can move. I move, sir. Amendment moved. The motion for consideration of the bill and the amendment moved thereto are now open for discussion. माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। सभापति जी, मारिया शारापोवा, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, डिएगो मैराडोना, बेन जॉनसन, शेन वॉर्न, शोएब अख्तर और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे भारत की धनलक्ष्मी ऐश्वर्या बाबू, ये वो नाम हैं। अगर हम ये सूची पढ़ें और आज डोपिंग बिल पे हम डिस्कशन की बात ना करें तो ये अपने अपने खेलों में इस प्रकार के खिलाड़ी रहे हैं, मारिया शारापोवा से लेकर और लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग तक, डिएगो मैराडोना तक, की पीढ़ियां उनको आदर्श के रूप में देखती हैं कि मैराडोना जैसा फुटबॉलर बनेगा। नहीं, आप, मैं कुछ और अभी आऊँगा। पीटी उषा जी उस सूची में नहीं है, मगर ये वो सूची है जो डोपिंग में, हाँ अब वो समझेंगे, ये डोपिंग में आए हैं। चेयर की तरफ ये सूची उन प्रतिष्ठित खिलाड़ियों की है जो डोपिंग के अंदर कहीं ना कहीं टेस्टिंग, जिन्होंने पॉजिटिव टेस्ट किया है और खेलों की खिलाड़ियों को गरिमा गिराने का काम किया। इसीलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं डोपिंग पे नियंत्रण लाने के लिए और भारत उन प्रयासों में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, ये राजनीति से ऊपर का विषय है। खेल खिलाड़ियों का कोई भी विषय मैं राजनीति से ऊपर मानता हूं। और जो ये बिल लाया गया है, हम इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं। और क्यों लाया गया है, थोड़ा सा जिक्र किया अनुराग जी ने। मुख्यतः ये जो एंटी डोपिंग की जो लेजिस्लेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, ये पिछले 20 साल से धीरे धीरे इन शेप में आई। सबसे पहले 1999 से लेकर 2002 तक एक फाउंडेशन बोर्ड बना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। हमारी सरकार भी उस फाउंडेशन बोर्ड का सदस्य। 2005 में, जैसे आपने यूनेस्को का बताया, यूनेस्को कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स 2005 में आया। हमारी सरकार ने उसे 2007 में
उसको रेटिफाई किया और 2009 में नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना की गई और टेस्टिंग लैब, नेशनल एंटी डोपिंग टेस्टिंग लैब भी हिंदुस्तान में स्थापित की गई। उसके बाद जैसे जैसे डोपिंग की परिस्थितियां बदली, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, ये जिनका जिक्र किया अनुराग जी ने, कि उनकी जो कन्वेंशंस है उनको हमें पूरी तरीके से फॉलो करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक इशू रेज किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन, सारी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस विच आर कंट्रोल्ड बाय रिस्पेक्टिव यूनियन गवर्नमेंट्स। उन्होंने कहा कि ये सरकारी, जितनी भी सरकारें हैं उसमें कोई हमारे देश का अलग से उन्होंने नहीं जिक्र किया, सभी सरकारों का, कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और उन्होंने स्ट्रिक्टली एक गाइडलाइन, नया कोड प्रकाशित किया 1 जनवरी 2021 को, कि जो जितनी भी नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें हमारी नैडा भी है, उनको ऑपरेशनली सरकारों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और एक तरफ ये कोड आया, दूसरी तरफ उन्होंने हल्का सा जिक्र किया, दूसरी तरफ इस दौरान 2019 में जो हमारे देश की नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लैबोरेटरी थी, वो सस्पेंड कर दी गई और उस 2021 में 19 में सस्पेंड हुई, जिसके बाद टेस्टिंग हमारी बहुत लिमिटेड हो गई, बाहर भेजने पड़े हमको जो सैंपल्स कलेक्ट हुए, टेस्टिंग बंद हो गई हिंदुस्तान में। और उसके बाद अब जाके उसका एक्रेडिटेशन दोबारा मिला है। तो ऐसे में ये अनिवार्य थी कि ये बिल लाया जाए और जो बॉडी बनी थी नेडा, जो कि एक सोसाइटीज एक्ट में बनी थी, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए और उसके साथ साथ एक फ्रेमवर्क, लार्जर फ्रेमवर्क, जो इन्होंने सेलिएंट फीचर्स बताए, जिसमें एक बोर्ड बने, नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाए, जिस बॉडी में डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस वेडा की गाइडलाइंस के तहत हो, और उसके साथ साथ इसके अंदर दो पैनल, एक डिसिप्लिनरी पैनल और एक अपील पैनल, दो अलग से पैनल बने, दो के चेयरपर्सन बने, उनकी सारी जो है गाइडलाइंस फॉलो की जाए। ये आ गया। इसमें स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस बिल को बड़े अच्छी तरीके से स्क्रूटनाइज किया। शद्दू बुद्धे जी उसके चेयरमैन थे, उनकी भी रिपोर्ट सभा पटल पे आ चुकी और मंत्रालय ने भी उनकी रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो, क्योंकि मैं स्वयं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूं पिछले 12 साल तक, मैं हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन का भी प्रेसिडेंट रहा हूं, मुझे संतुष्टि है क्योंकि 12 साल का सबसे बड़ा टेन्योर होता है। अभी रिसेंटली तक मैं हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, अनुराग जी जानते हैं। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि हमारे देश के इतिहास में सबसे सफल ये फेडरेशन रही है। पिछले 4 ओलंपिक में लगातार हमने मेडल दिया है देश को और 50% ओलंपिक के मेडल केवल हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन के हमारे रेसलर्स लेके आए हैं। तो मगर धरातल की कुछ बातें इसमें मैं आपसे कुछ सुझाव देना चाहता हूँ जो इस बिल के संबंधित हैं। कुछ बातें तो स्टैंडिंग कमेटी ने ली कि इसमें, जैसे पहला, स्टैंडिंग कमेटी का एक बहुत अच्छा सुझाव है, उसको आपने जिसमें लिया नहीं, कि जो एथलीट्स हैं और जो खिलाड़ी हैं उन सभी को एक कैटेगरी में रखा गया है। उनके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा वो एक कैटेगरी में ही है। उसमें 2 अलग अलग कैटेगरीज कर दी जाएं। माइनर, यानी कि कम से जो वाडा ने माइनर को 16 साल से कम के खिलाड़ियों को अलग कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इसमें खास तौर पे जो बहुत यंग एज के खिलाड़ी होते हैं वो कई बार प्रभावित होते हैं, बाकी बहुत सी, तो उनका अलग से प्रोविजन हो, कम उनकी पेनल्टीज हो। ये बहुत अच्छा सुझाव आया था स्टैंडिंग कमेटी का। मैं भी आपसे ये आग्रह करता हूँ, ये हमने भी देखा है। दूसरा, सटीक मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूँ। आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति अनुराग जी ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई टेस्टिंग नहीं होती, स्टेट लेवल के हम खेल करते हैं, कोई टेस्टिंग नहीं होती, और मैं आपको ये बताऊं नेशनल लेवल पे भी कोई टेस्टिंग नहीं होती, बहुत कम। खेलो इंडिया का जो आपका, मैं आज मेरी जगह राजनीति से ऊपर उठ के मैं बात कर रहा हूं सभापति जी, खेलो इंडिया का बहुत अच्छा एक कार्यक्रम सरकार ने चलाया है, उसमें आपकी टेस्टिंग होती है। खेलो इंडिया के उदाहरण का मैं तौर पे कहना चाहता हूं। लेकिन जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस के और जो अलग अलग खेलों के डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल की प्रतियोगिताएं हैं, वहां पे टेस्टिंग नहीं होती।
अनिवार्यता से कोई टेस्टिंग, यहां तक कि मैं आपको उदाहरण दूंगा कि स्टेट चैंपियनशिप में या नेशनल चैंपियनशिप में कई बार खिलाड़ी नेडा के आगे अपनी अर्जी देते हैं कि हमें शक है कि दूसरा खिलाड़ी डोपिंग कर रहा है, उस अर्जी पर भी लगभग टेस्टिंग ना के बराबर जवाब उनको मिलता है और टेस्टिंग नहीं होती। तो जब आज ये बिल लेके आप आए हैं तो इसमें कहीं भी आपने ये निर्धारित नहीं किया है कि किस लेवल पे टेस्टिंग हो। ओवरऑल देश में, हमारे देश में 4 से 6 हज़ार सैंपल लेने की आज के दिन आपकी कैपेसिटी है, और हमारे देश की जो टेस्टिंग है ओवरऑल का तो आपको थोड़ा सा आपने अंदाजा दिया है, लेकिन मेरी मांग है कि कहीं ना कहीं नेशनल और स्टेट चैंपियनशिप में कम से कम डिस्ट्रिक्ट स्तर पे ना जाएं, क्योंकि हम जो एलीट एथलीट हैं उन पे लगातार टेस्टिंग करके उनको अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए तो उनको फिट करके भेजना चाहते हैं, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हो रही है? आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के खेलों में जाके देखो, आपको सिरिंज पड़ी मिलेंगी वहाँ पर, जो है ऐसे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि खिलाड़ी वहाँ से जो है कहीं ना कहीं जब लैंस आर्मस्ट्रांग और मारिया शारापोवा, डिएगो मैराडोना डोपिंग कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू कर रहा है उसको आगे बढ़ना है। तो आप निर्धारित कीजिए, और रैंडम सैंपलिंग की बजाय अगर ये तलवार लटका दें आप स्टेट चैंपियनशिप में, नेशनल चैंपियनशिप पे, कि 10% जो खिलाड़ी हैं उनकी टेस्टिंग जरूर होगी, 5% खिलाड़ी हैं उसकी टेस्टिंग जरूर होगी, हर प्रतियोगिता में होगी, तो कम से कम कुछ तलवार लटकी रहेगी, वहां से हम क्लीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करें। इसमें एक और बात है अनुराग जी, जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल है, जो इंडिपेंडेंस की बात वाडा ने करी कि भाई ये जो नेडा है ये सरकारी इन्फ्लुएंस से अलग होना चाहिए, कल को ऐसा ना हो जाए कि कोई खिलाड़ी का पॉजिटिव आ जाए। और अनुराग जी क्योंकि बहुत व्यवहारिक हैं और खेल मंत्री हैं देश के, तो अलग अलग लोग सांसद उनको फ़ोन करें अपने जिस क्षेत्र का वो खिलाड़ी है कि जी आप इनको लीनियंसी कर दीजिए, क्योंकि चेयरमैन तो सरकार ही लगा रही है, मेंबर्स भी सरकार लगा रही है, और डिसिप्लिनरी पैनल के भी, अपील पैनल के भी, और उनको हटाने की भी अनलिमिटेड पावर सरकार के पास ही है, तो सरकार के हाथ में सारी बात आ गई। तो इसमें एक सुझाव आया, मैं देना चाहता हूँ, ये जितनी और रेगुलेटरी बॉडीज़ आप देखेंगे अनुराग जी, बहुत सी रेगुलेटरी बॉडी की, क्योंकि वैक्यूम में काम नहीं कर सकती, आखिरकार नियुक्ति सरकार को करने में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, लेकिन बहुत सी जो रेगुलेटरीज बॉडी हैं उनमें जो नियुक्ति की रूल्स हैं वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, वही लोग नियुक्त हो। दूसरा, रूल्स के साथ साथ ग्राउंड ऑफ रिमूवल, अभी आपने ग्राउंड ऑफ रिमूवल की पावर बोर्ड को दे दी, जो आप बोर्ड बना रहे हैं, मगर बोर्ड किसी बिना कोई कारण बताए किसी रिमूव कर सकता है डिसिप्लिनरी पैनल में और अपील पैनल में जो फैसला करेंगे खिलाड़ियों का। तो ग्राउंड ऑफ रिमूवल अच्छे से नोटेड हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्राउंड ऑफ रिमूवल अगर क्लियरली, जो जैसे बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे ट्राई है, बाकी हर क्षेत्र में रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनमें ग्राउंड ऑफ रिमूवल को अच्छे से अंकित करने की एक अनिवार्यता से एक प्रावधान होता है। मैं मांग करता हूं कि यहाँ भी, इस बिल में नहीं है, मगर यहाँ भी अगर आप वो करें तो बहुत सहूलियत होगी। तीसरी बात जो मैं समझता हूँ कि इस बिल के दायरे में नहीं है लेकिन वो महत्वपूर्ण है, अगर इसमें सर पहले तो डिसिप्लिनरी जो एक इस बिल के माध्यम से एक पैनल बन रहा है, डिसिप्लिनरी पैनल, अगर नेडा प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी, नेडा को कोई पॉजिटिव मिला कोई खिलाड़ी, वो उसके डिसिप्लिनरी पैनल में रिपोर्ट दे देगी, वो प्रोसिक्यूशन करेगी उस खिलाड़ी का, और वो डिसिप्लिनरी पैनल उस पर कार्रवाई करेगी। कार्रवाई करने के बाद जो अपील है, अपील अथॉरिटी भी, अपील पैनल के बाद फाइनल अगर अपील करनी है, किसी खिलाड़ी को संतुष्ट नहीं है, तो उसको जाना पड़ेगा स्विट्जरलैंड, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लसॉन स्विट्जरलैंड। ये जाहिर है वाडा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग अथॉरिटी है उन द्वारा निर्धारित है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, लेकिन आज दुनिया की परिस्थिति बदल रही है। सबसे बड़ी जनसंख्या समूह कहीं है दुनिया में तो एशिया में, और एशिया में 2 मुल्कों में, चीन और हिंदुस्तान। ऐसे में स्विट्जरलैंड हमारा कोई खिलाड़ी जाएगा अपील करने, कितना उस पर पीछे भी हमने देखे कई आए, मनजीत सिंह वर्सेस नेडा केस आया, वो स्विट्जरलैंड तक गए, मनजीत सिंह जो खिलाड़ी थे हमारे देश के। तो ऐसे में मेरी मांग है कि आप प्रयास करें वाडा के पास, क्योंकि वाडा को भारत सरकार का भी सपोर्ट रहता है। जो हमारी टेस्टिंग लैब अभी डिस्क्रेडिट कर दी गई थी, उसके बाद भारत सरकार ने 1 मिलियन उनको जो है ग्रांट दी रिसर्च के लिए, उसके बाद दोबारा से एक्रेडिट की गई। तो
तो कम से कम एक बेंच, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एक बेंच हिंदुस्तान में क्यों ना बने। आज हम ये सदी हिंदुस्तान की सदी मानते हैं। भारतवर्ष दुनिया के पृष्ठभूमि सबसे उभरता हुआ हमारा देश है, तो हमारी मांग होनी चाहिए कि यूरोप में तो एक एशिया में क्यों ना हो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का बेंच, ताकि हमारे खिलाड़ी स्विट्जरलैंड में उस पर अपील करना पड़े तो उससे अच्छा जो है हमारे देश के अंदर वो अपील कर सके। एक और इसमें मैं सुझाव देना चाहूँगा, जो आपने इस कानून में पनिशमेंट का जो प्रावधान दिए वो प्रावधान जनरल है, उनमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। उनमें केवल आपने कि कितने समय तक बहनों ये कुछ नहीं कहा गया, कहा कि भाई उनके मेडल वापस ले लिए जाएंगे, उन पे कोई कार्रवाई की जाएगी, फाइनेंशियल कार्रवाई की जाएगी इत्यादि। स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसका जिक्र किया है कि वो कुछ ना कुछ उस बारे में स्पेसिफिसिटी आए कि कितनी प्रोपोर्शन टू क्या ऑफेंस है, उसमें डिटर्मिन ये हो, क्योंकि खिलाड़ियों का पीक करियर बहुत लिमिटेड होता है। ये पूरी पावर हम दे दिए जाए और अनलिमिटेड पावर दे दिया जाए जिसमें कोई गाइडलाइंस ना हो कि वो कुछ भी कर सकते हैं उनको, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ स्पेसिफिक आप ज़रूर उसमें वो बात लाएं। आज सभापति महोदय देश के खेल की बात आ रही है और ये मैं समझता हूँ कि इसको अच्छे से अगर आप करेंगे तो देश के खेल की खिलाड़ियों की साख बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक कदम है। और मुझे खुशी है कि हमारे मित्र अनुराग ठाकुर जी जो स्वयं खेलों की पृष्ठभूमि से आते हैं वो इस मंत्रालय को देख रहे हैं। ऐसे में ये एक फ्रेमवर्क देने की बात है। हम अपने खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा प्रतिभा हम मानते हैं, हिंदुस्तान के गाँव में हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रतिभा है, उनको एक फ्रेमवर्क देने की बात है और ये महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगा, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो हमारे प्रदेशों में कुछ अच्छे तजुर्बे हुए हैं, उनको देश स्तर पर लागू किया जाए। और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ हरियाणा का। हरियाणा एक हमारा छोटा सा प्रदेश है सभापति महोदय, 2% देश की आबादी। हरियाणा इस सदी से पहले पिछली अगर हम देखें तो पुराने समय में एशियाई खेल कॉमनवेल्थ खेलों में हमारी प्रदर्शन अच्छा नहीं था। हरियाणा में 2004 के बाद जो हमारी सरकार वहाँ पे आई, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अच्छा उदाहरण है, वो भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो एक हम हरियाणा में एक नीति लेके आए, पदक लाओ पद पाओ और प्रतिष्ठा पाओ। व्यापक स्तर पर उस नीति को हमने हरियाणा में लागू किया और जो 2% आबादी वाला प्रदेश है उसका नतीजा ये हुआ कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम जब हुए तो कॉमनवेल्थ गेम में 39 गोल्ड मेडल में से 22 गोल्ड मेडल 2010 में अकेले हरियाणा प्रदेश के आए। और वहाँ से लेकर आज तक, आज भी पिछले 3 एशियाई, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गोल्ड मेडल, ओलंपिक खेलों की आप बात करेंगे तो 40% मेडल अकेले हरियाणा के हैं और ओलंपिक खेलों में 50% भारत के मेडल। आप पिछले ओलंपिक की आप बात कर रहे थे, चाहे वो पिछले ओलंपिक में 2 ही मेडल निराशाजनक प्रदर्शन रहा था, साक्षी मलिक और पीवी संधू, मगर साक्षी मलिक हरियाणा से थी। और इस ओलंपिक मेडल में भी, इस ओलंपिक खेलों में भी, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो हमारे, चाहे वो रवि दहिया हो, चाहे वो बजरंग पुनिया हो, तो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने देश की जो है भारत माता की झोली मेडल से भरने का काम किया, 40 से 50% मेडल आज हरियाणा के खिलाड़ी एशियाई और यहाँ तक कि कॉमनवेल्थ खेलों में अगर हरियाणा के मेडल अलग से अगर रख दें तो बड़े बड़े मुल्क जिसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं उनसे दुगने मेडल अकेला हरियाणा लेके आ रहा है देश के लिए। तो इस बात का हमारे को गर्व। उसके पीछे नीति थी, 2-3 नीतियां, जैसे मैंने कहा पदक लाओ, पद और प्रतिष्ठा पाओ। 700 से ज्यादा खिलाड़ियों को सीधा डीएसपी, सब इंस्पेक्टर पदों पे नियुक्त किया गया था। उसके साथ हमारी एक नीति थी स्पैट, स्पोर्ट्स फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, हर स्कूल की बच्चे का अनिवार्य था। और अनिवार्यता के बाद जो 10% बच्चे सबसे टॉप में आते थे उनके 1500 से 2000 उनको स्टाइपेंड मिलता था, ताकि एक जो पहले जमाने में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, हमने उसको बदलने का प्रयास किया हरियाणा में और कहा कि अगर खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे कामयाब। दोनों रास्ते अच्छे हैं ताकि अच्छी दिशा में हमारे देश का और हमारे प्रदेश का युवा जाए। इसके अलावा व्यापक स्तर पे 500 से ज़्यादा ग्रामीण स्तर पर खेल स्टेडियम और उन स्टेडियम्स के अंदर बड़ी एकेडमीज, कोच आदि की नियुक्ति की गई, डाइट एक्सेट्रा के प्रावधान किए गए। नतीजा ये आया कि आज हरियाणा के खिलाड़ी आगे बढ़ पाए
मैं अनुराग जी से ये आग्रह करूंगा कि मेरी मांग भी है कि ये जो कुछ नीतियां थी, आज खेलो इंडिया अगर आप देखें तो थोड़ा सा उस पैड से लगता है कि उसके कहीं ना कहीं कुछ अंश उसमें लिए गए हैं, तो हमें खुशी है इस बात की। और भी जो हमारी नीति थी, खास तौर पर पदक लाओ पद पाओ, क्योंकि आज खिलाड़ी क्यों करता है डोपिंग? उसको लगता है कि भाई जीत गए तो सब कुछ है और हार गए तो कुछ नहीं। मगर ये जो इस तरह की नीतियां बनती हैं, इसमें अगर खिलाड़ी एक लेवल तक पहुंच जाए तो भी अगर उनको पद से, सरकारी रोजगार से अगर उसको सरकारी रोजगार दिया जाए तो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेके उसको उतनी चिंता नहीं रहती। ये सरकार का, तो इस नीति को आप राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को लेके जाएं ताकि देश की, भारत माता की झोली, भारत माता के नौजवान आने वाले समय में हम दुनिया के अंदर आगे पहुंच पाए। और साथ में मैं ये भी आग्रह करूंगा कि हरियाणा सरकार को भी आप, क्योंकि 3% जो खिलाड़ियों का कोटा था हरियाणा में बंद हो गया, जो डीएसपी लगते थे पिछले 8 साल से, कोई डीएसपी जो पुराने सारे एथलीट थे, विजेंद्र सिंह बॉक्सर हो हरियाणा सरकार में, हरियाणा पुलिस में डीएसपी, योगेश्वर पहलवान हो हरियाणा पुलिस में डीएसपी, बबीता फोगाट हो हरियाणा पुलिस में डीएसपी, सारे खिलाड़ी उस समय आए थे। लेकिन अगर आप देखें अभी साक्षी मलिक, 2 ही मेडल आए थे ओलंपिक में, हमारी एक बेटी साक्षी मलिक थी, पिछले 5 साल से प्रयासरत है मगर उनको कोई नियुक्ति नहीं मिली। अभी जो इस ओलंपिक में रवि दहिया, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा के जो मेडल आए हैं उनकी तो मैं क्या जिक्र करूंगा, पिछले ओलंपिक में ही किसी को नियुक्ति नहीं मिली। ये भारत माता के धरोहर है। राजनीति, खेल, खिलाड़ी ये राजनीति से ऊपर होने चाहिए। जैसे हमारी नीति में पहले नियुक्तियां मिलती थी, मैं आग्रह करूंगा आप हरियाणा सरकार से भी आप आग्रह करें कि उनको नियुक्तियां उसी पैटर्न पर नियुक्तियां मिलें, और आप भी देश में भी इस खेल नीति को लागू करें कि एक छोटा सा 2% आबादी वाला प्रदेश अगर देश के लिए 50% मेडल जुटा सकता है तो इस नीति को आप पूरे देश में लेके जाएंगे तो मैं समझता हूं कि देश के खेलों में और ज़्यादा हम आगे बढ़ पाएंगे। जो आप इस सूझबूझ के साथ ये बिल लेके आए हैं, मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छा, ये एक सकारात्मक कदम है, एक एनवायरनमेंट आपने देने का प्रयास किया है। खेल खिलाड़ी जो है उनको प्रोत्साहन देने के लिए अच्छा वातावरण बनेगा। सरकार कई विषयों में इसमें खेलो इंडिया इत्यादि, जैसे मैं एक खेलो इंडिया से संबंधित एक और सुझाव आखिरी, मैंने खेलो इंडिया की प्रशंसा करी, खेलो इंडिया अच्छा काम कर रहा है। जब ये खेलो इंडिया की प्रतियोगिताएं होती हैं सर, तो जिस तरह का खाने पीने का, उनका ठहरने का इंतजाम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये पहले नहीं किया जा रहा था। इस बात के लिए जो है भारत सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ। खेलो इंडिया में आप अच्छा काम करें, लेकिन खेलो इंडिया में एक कमी भी है। खेलो इंडिया से जो जीत रहे हैं उनको, विजेताओं को किसी सरकार में, जैसे मैंने कहा कि नेशनल में जो मेडल्स आते हैं उनको कई डिपार्टमेंट्स उनके सर्टिफिकेट्स को मानता है, चाहे हरियाणा सरकार हो, प्रदेश सरकारें हो, चाहे भारत सरकार में रेलवे इत्यादि हो। मगर खेलो इंडिया में जो विजेता हैं उनको अभी कहीं किसी स्पोर्ट्स नीति में देश में, ना प्रदेश सरकारों की, ना आपकी राष्ट्रीय देश की सरकार की, उनको वो जो है अनिवार्यता से उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा, उनको लाभ नहीं मिल रहे। तो खेलो इंडिया को कनेक्ट किया जाए, ये भी मेरी एक आपसे मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति जी, मैं एक बार फिर अनुराग जी का धन्यवाद करता हूँ इस बिल लाने पर और पूरा समर्थन करता हूँ। धन्यवाद दीपेंद्र जी। माननीय प्लीज, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स रिटायर्ड। माननीय सभापति जी, जैसा कि माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि हिंदुस्तान की मेडल टॉली में हरियाणा के 50% मेडल होते हैं, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि उनके बाद मेरे को बोलने का अवसर दिया। मुझे लगता है इस बिल में भी हरियाणा का 50% कंट्रीब्यूशन होगा। एंड सेकंड थिंग, आई डू अप्रिशिएट the discussion on bill is above political levels. A soldier will certainly appreciate it. Historically, drug use was often sanctioned and encouraged by militaries through including alcohol, tobacco in troop rations. Performance enhancers का इतिहास इतना ही पुराना है जितना बैटल का और मैनकाइंड का। ओपियम लेके लोग लड़ाइयों में जाते थे, ओपियम एडिक्ट भी हो जाते थे, और उसका कारण था कि इनडिफरेंस टू डेंजर हो जाता था। देन केम
performance enhancers, especially anabolic steroids and methamphetamine ड्यूरिंग वार्स, क्योंकि इनसे एपिटाइट कम हो जाती थी और साथ में सस्टेन्ड दे कुड डू दी जॉब, और इनका नाम कहा जाने लगा लिक्विड करेज। मगर एक ऐसी स्टेज आ गई कि 1960 के ओलंपिक में साइक्लिस्ट एन मार्क 100 किलोमीटर की दौड़ में गिर गए एंड ही डाइड ऑन दी स्पॉट। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें मेफेंटामीन का लेवल काफ़ी हाई मिला। तो ये मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि ये परफॉर्मेंस एनहांसर्स तो हैं, मगर साथ में डेंजरस फॉर दी बॉडी हैं। और क्या है डोपिंग मटेरियल? उसकी डेफिनेशन ये है कि आपने ऐसा मटेरियल, ऐसा केमिकल, ऐसी दवाई ले ली जो नॉर्मली बॉडी में सिक्रीट नहीं होता, अगर होता भी है तो उस लेवल तक का नहीं होता जो नॉर्मल रेंज में है। तो इन डोपिंग मटेरियल्स पे आज रेगुलेट करने की बात हो रही है, बैन लगाने की बात हो रही है, कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, अगर पकड़ा गया तो उसको क्या पनिशमेंट होगी और क्या उसकी अपील होगी। इट हैज बीन एम्पली कवर्ड बाय ऑनरेबल दीपेंद्र सिंह। एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूँगा कि खेल का जिक्र हो और हरियाणा का जिक्र अधूरा रह जाए। हरियाणा में एक कहावत है कि या तो हरियाणा का छोरा और अब तो छोरी भी, या तो खेत में या फौज में और या फिर खेल में। अगर इन तीनों जगह वो नहीं है और उसको नौकरी ना मिले तो उसके जेल जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज बबलिंग विद यूथ, डायनामिज्म, एनर्जी, परसिवियरेंस एंड फोर्टिट्यूड। और ऐसा आदमी को अगर बगैर नौकरी छोड़ दिया जाए तो फिर वो कबाड़ा कर सकता है। इसलिए मेरी अपील है सारी स्टेट गवर्नमेंट से कि हरियाणा के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उनको आप नौकरी दें स्पोर्ट्स में। जैसा कि इन्होंने बताया पदक लाओ और पद पाओ, ये सच्ची बात है। मगर एक बात मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो मैं यूनिफॉर्म में 40 साल मैंने बिताए हैं और आई रिकमेंड इट कि भाई पुलिस में डीएसपी भर्ती कर दिया। एक डीएसपी का जिक्र जरूर करना चाहूँगा, इन्होंने भी किया। हमने नेगेटिव तो सुना डोपिंग के बारे में, एक पॉजिटिव बात, ओलंपियन योगेश्वर दत्त को ब्रॉन्ज मेडल मिला लंदन ओलंपिक्स में। रशियन प्लेयर खुडरोव रेसलर का डॉप टेस्ट हुआ। डॉप टेस्ट की रिपोर्ट आई पॉजिटिव एंड योगेश्वर दत्त वाज ऑफर्ड कि योर bronze medal can be upgraded to silver medal. In the meantime, wrestler Khudrov died in an accident. And kudos to Yogeshwar Dutt. He refused to take the medal and said, let it be a tribute. ये उस wrestler के लिए श्रद्धांजलि रहने दे। So I will like to highlight the character of athletes and sports person. बात नौकरी की हो रही थी और हरियाणा की हो रही थी। उसमें मैं दीपेंद्र सिंह जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 2004 से पहले भी हरियाणा का ही रोल था। फौजी परिवार से होने के बावजूद भी
पहले नेशनल स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अगर हिंदुस्तान का कोई रोल था तो वो फौज का था। सारी टीमें, चाहे रेसलिंग की हो, चाहे उदयचंद हो, चाहे चंदगीराम हो, चाहे लीलाराम हो, चाहे सज्जन सिंह हो, चाहे बॉक्सर्स हो, मेहताब सिंह, हवा सिंह, वो सारे फौज के थे और वो थे भी मैक्सिमम हरियाणा के। मैंने एक ऐसी यूनिट में काम किया, रेजिमेंट में काम किया है, वो थी 2nd जाट बटालियन ऑफ द रेजिमेंट, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स एंड स्पोर्ट्समैन थे। मगर नौकरी में एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से, प्लीज आप चेक कर दें। हाँ सर, बात की थी इन रेसलर्स के बारे में जो डीएसपी लगे, तो एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आई। वो कहते हैं इनको रेसलिंग के सिवाय बाकी तो एग्जाम पास करें, वरना हरियाणा में तो सारे ही फौजी, सारे ही रेसलर, वो तो फिर सारे ये पुलिस वाले फौज, ये रेसलर ही हो जाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रैक्टिकल एंड फिजिबल ना होने की वजह से आपके माध्यम से बाकी स्टेट से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इनको आप एडजस्ट करो ताकि आपके मेडल भी आने शुरू हो। ऑफ कोर्स माय कॉम्प्लीमेंट्स टू पीवी सिंधु एंड पीटी उषा जी सीटिंग हेयर, कि दूसरी स्टेट्स की भी परफॉर्मेंस, खासकर केरला की परफॉर्मेंस तो बहुत बेहतर है। और उसमें अगर खेल का नाम लें और स्पोर्ट्स यूजेनिक्स की बात ना करें, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में एनाबोलिक स्टीराइड्स के इस्तेमाल की वजह से खासकर जीडीआर होता था। बिकॉज मेरी उम्र 73 ईयर्स हो गई है एंड आई हैव बीन फॉलोइंग स्पोर्ट्स क्वाइट कीनली। उसमें स्टीराइड्स कहो, ट्रेनिंग कहो, यूजेनिक्स कहो, उसकी वजह से मेडल टैली वाज हेविली tilted towards USSR and Eastern European countries। जैसा कि मैंने कहा यूजेनिक्स, तो मैं यहाँ पे खाप पंचायत को जरूर लाना चाहूँगा। खाप पंचायत हैं तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस टू मेंटेन स्टेबिलिटी, मगर उनका एक प्रिंसिपल था कि आप क्लोज रिलेशन में शादी नहीं करोगे, यानी इन योर क्लैन, your mother's clan, your daddy's clan, means cross breeding improves the breed। तो यहाँ मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान से दरखास्त करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में 5000 ऐसी जातियाँ और सब जातियाँ हैं जो दे डोंट इंटरमैरी। ए नेशन मीन्स इंटरमैरिंग एंड इंटरडाइनिंग। व्हेन इंटरमैरिंग स्टार्ट्स आवर मेडल टैली मे इम्प्रूव बिकॉज ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, और जातिवाद का भी छुटकारा हो जाएगा। रही बात इंसेंटिव्स फॉर स्पोर्ट्स, इंसेंटिव्स फॉर स्पोर्ट्स, प्लीज स्पीक। हाँ हाँ, यस, इंसेंटिव्स में मैं ये जरूर कहूंगा, कृपया सीट पर बैठकर बात न करें, प्लीज। नहीं, वी एडवोकेट इंटर रिलीजन आल्सो। हाँ हाँ, यस, मैं ये कहूंगा कि इंसेंटिव्स की बात थी। इंसेंटिव्स 3 हिस्से में से एक हिस्सा तो बोल गए, मगर एक बेचारा फौजी भी शहीद होता है। अगर 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए ओलंपिक गोल्ड मेडल को देते हैं, सिल्वर मेडल को 3 करोड़ देते हैं, तो फौजी को कम से कम 1 करोड़ ही दे दो, और एक स्टेट में एवरेज, और इस पे भी क्लैपिंग कर दो। मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा। रेस्ट आई विल से, सर मेरा टाइम बता दो, क्योंकि नहीं, आप अपनी बात कंक्लूड कर रहे हैं ना। कंक्लूड इतनी जल्दी करने के मूड में नहीं हूं, मगर आप बोलिए, अभी आपके पास समय है। हाँ, अभी तो समय है, पार्टी ने जो समय दे रखा है वो समय भी है आपके पास। प्लीज। नहीं, मैं असल में आमतौर से मेरा पुराना एक्सपीरियंस ये है कि मैं ठीक
ट्यून में होता हूं तो बोल दिया जाता है बैठ जाओ, और मैं बैठ जाता हूं। एक मैं ये लेबोरेटरीज के बारे में कहूंगा। ये तो मैं मुबारकबाद दूंगा अनुराग जी को, बट ही हैज गॉट एम्पल कम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन दिस इशू कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स and further encouragements, especially giving to the young athletes and catching them young. उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ऐसी ओरिएंटेशन जरूर की जाए कि इनको बाद में दे आर नॉट लेफ्ट ऑन द ग्राउंड, इनको जॉब जरूर मिले। रही बात लेबोरेटरीज की, लेबोरेटरीज में एक बात इंटेग्रिटी की करना चाहूँगा। इसमें लिखा हुआ है कि एथलीट के हकूक को एनक्रोच अपॉन ना किया जाए। मैं NABL लेबोरेटरीज से मेरा एक्सपीरियंस है, नेशनली एक्रीडिटेड बायोलॉजिकल लैब्स, एज ए मेडिकल एजुकेशनिस्ट। उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सैंपल अप्रूव करवाने की तो कम करप्शन है, यानी करप्शन तो वी हैव टू एक्सेप्ट इन दिस कंट्री के फ्रॉम द डे वन जो है वो अनमैनेजेबल सी है, मगर सैंपल रिजेक्ट कराने की ज्यादा बड़ी करप्शन है। इस चीज का शिकार एथलीट्स ना हो जाएं कि कम से कम NABL की तरह इन लेबोरेटरीज को भी इंटेग्रिटी का ख्याल रखा जाए। माननीय दीपेंद्र सिंह जी का एक और बात थी कि ये इंडिपेंडेंट बॉडीज रखी जाएं। इंडिपेंडेंट बॉडीज के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूं, इन पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज वी हैव ए वेरी बिटर एक्सपीरियंस ऑफ statutory bodies and independent bodies. We dispensed with the Medical Council of India, which became a state within a state, and Delhi High Court had to tell or label it to be a den of corruption. So until and unless Indian character improves, the state within state may backfire. Therefore, there should be unity of command rather than multiplicity of commands, and unity of command is that it should come under the government. And it was not only Medical Council of India, Pharmacy Council of Haryana now going on, dental councils and other councils, means this independent should be for the government, not under the government. Like soldiers, they should remain disciplined under government. I put it this way. As far as standing committee is concerned, Lok Sabha Speaker, Mananiya Lok Sabha Speaker and Chairman Raj Sabha had referred it to the departmental standing committee, and they made quite good recommendations to make it more user friendly, and those have been agreed to by the minister when it was put, and still the rules need to be framed. In rules the further relaxation can be given. As far as selection of the committees and board is concerned, certainly men of integrity and men of professional integrity should be appointed to those posts. Otherwise, it becomes another futile exercise, but that will be made sure. And I will like to bring it to everybody's notice through you, sir.
एक एथलीट, एक स्पोर्ट्समैन का इज्जत व इकबाल बुलंद रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उनको एयरपोर्ट पे खुशामदीद कहने जाते हैं, उनको सी ऑफ करते हैं, उनको शाबाश देते हैं और उनको साथ साथ में सिर्फ हौसला अफजाई नहीं, फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं और उन फैसिलिटीज का रिजल्ट ये है कि रिकॉर्ड फॉर इंडिया 7 मेडल्स एंड ये एक शुरुआत है। हम ऐसी इराद से ताल्लुक़ रखते हैं, जब मेडल्स का अकाल था पूरी दक्षिणी एशिया में एक भी मेडल नहीं होता था और जर्मनी की कोरलिनिया एंडर जिम्नास्टिक्स में अकेली 10 मेडल, फ्लैप्स ऑफ यूएसए 10 medals, and still in Commonwealth Games we are doing very well. It's okay as compared to past, and especially these last 8 years have really been excellent. But still a lot needs to be done because हिंदुस्तान की पॉपुलेशन करीबन 2 करोड़ सालाना बढ़ती है, हरियाणा की पॉपुलेशन 2.25 करोड़ है, मगर ऑस्ट्रेलिया की तो टोटल पॉपुलेशन हरियाणा से कम है और मेडल बहुत ज्यादा है। इस तरफ इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पोजीशंस वी मस्ट लुक इनटू इट एंड मेडिकल्स शुड वॉक इन। एक बात मैं और एथलीट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि गांव में कहते हैं भाई छोरा 17 और 27 के बीच में आ गया। 17-27 के बीच में मीन्स हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस पीरियड एट दैट टाइम। हिज रिफ्लेक्सेस आर फास्ट, हिज रिफ्लेक्सेस आर क्विक, हिज सेंसेस आर वेरी सेंसिटिव। बट व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? आफ्टर दैट आप देखोगे कि कोच साहब आ रहे हैं, मैनेजर साहब आ रहे हैं, इतना बड़ा पेट, और मैनेजर जो है रेसलिंग टीम का, मैनेजर कुश्ती टीम का, मैनेजर एथलेटिक्स का। फौज एक ऐसी चीज है कि जनरल भी प्रमोट होगा तो उसका मेडिकल और वेट हाइट दोबारा ली जाती है और सामने का फोटो भी और साइड से फोटो भी। तो इसी तरह से इनका भी कांस्टेंट दे शुड बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जो खुद ही अनफिट हो दूसरे को क्या एथलीट बनाएगा? ये this discipline should be imposed upon the coaches, on managers, and on even doctors who are accompanying the Olympic teams or international events. माननीय डॉक्टर वत्स जी, अब कंक्लूड कर सकते हैं आप। Sir, thank you very much. Thank you. थैंक यू। डॉक्टर शांतनु सेन जी, डॉक्टर शांतनु सेन। Good afternoon, one and all. Sir, through you, I would like to put forward certain important points before our learned minister, which I propose to get incorporated or accommodated or considered for better implementation of this bill. Sir, as we all know by now that WADA, that is World Anti-Doping Agency, was formed in 1990 under the International Olympic Committee. Then WADA considered that there should be a doping agency in each and every country. Accordingly, NADA was formed in November 2009. As a society, it was registered under Society Registration Act. Then it was felt that as there was no legislation, certain decisions taken by this agency could have been taken to court by the other parties. So there was a need of legislation. Accordingly, it was proposed by the State Standing Committee in 2020. And thereafter, it has been converted to a statutory body like NADA. Sir, certain drawbacks of this act is, number one, there is a provision of Director General of NADA, whose qualifications are not yet mentioned in the bill. Secondly, it has been mentioned categorically that Government of India may remove this Director General at any point of time from the office
on such ground, within bracket. What are the grounds that have not been mentioned in the bill, sir? Thirdly, it has been mentioned that the term for this DG would be 3 years, but it might be extended subject to the decision taken by Government of India. So there is a clear-cut question that Director General will be bound to work under the directives of Government of India. He will be unable to work independently. Secondly, there is a provision of National Board, and in the National Board there is a provision of disciplinary panel. Like if there is a case of any doping, this disciplinary panel can take the decision so far the punishment is concerned. And the appeal panel. If that particular athlete feels that it has been done as an injustice to him, he can go to that appeal panel. Unfortunately, it has been mentioned that board can remove the members of these panels at any point of time, and even they cannot be given any chance of being heard of. Here lies the question once again, so far the independence of this authority is concerned. Sir, qualification of members. WADA, that is World Agency, has categorically mentioned there should be specific guidelines so far the qualifications are concerned, which are missing in this existing bill, sir. Sir, clause 11.2 and clause 11.5 of this bill, it is mentioned that disciplinary panel will consist of 1 chairperson and 4 vice chairpersons. And it has been mentioned that in absence of the chairperson, 1 vice chairperson will take the lead role. But who is this 1 vice chairperson out of the 4? It is not mentioned clearly, sir. Sir, there are certain standing committee recommendations. Number 1, selection and appointment mechanism process should be clear and transparent. There should be clear-cut discrimination between major and minor athletes and physically challenged athletes. Specific SOP is needed regarding the therapeutic use exemption. There is clear-cut confusion if an athlete doesn't know whether he can take a simple paracetamol or he cannot. So there should be adequate awareness as well. Penalties of athletes should be proportionate to the amount of the crime done by the athletes. It should be proportionate one, sir. After the period of his punishment is over, he should be once again entitled and allowed for each and every competition so far the medals and others are concerned, because we know that duration of one athlete is very short, sir. Thirdly, dope testing laboratory. It was very unfortunate to note that the only laboratory in India was banned for nearly 1 year. There are 29 accredited labs in the world. Asia is having 6. Our suggestion, each state should have 1 laboratory, sir. And I sincerely endorse the statement made by my Congress colleague that we should give our best possible effort to have 1 unit instead of Switzerland, 1 unit in our in our country, or if not possible, at least in Asia, sir. Sir, there is another confusion regarding athlete support personnel. Who are the persons to be considered as athlete personnel, support personnel? It needs to be mentioned clearly in the bill. And last but not the least, my humble submission before my learned minister will be, we should look into it so that these bodies and these organizations can act neutrally and independently, not directly being governed by the Government of India. We have enough discussion regarding Khelo India. I believe someday there will be enough discussion on Becho India, and thereafter in the country there will be Khela Hobe. We are waiting for that. And I strongly contradict the statement made by my BJP colleague. He said that MCI was corrupt, and for the same NMC was formed. I can cite you several examples where NMC is being accused for so many irregularities. So I strongly contradict him, sir. And last but not the least, I believe our minister will take necessary steps so that this organization can work independently, unlike the Delhi police who restrained the Bengal CID speak on the from subject. investigating and speak on the subject that will only go on the record. Please. Mane Enare Lango, Honorable Enare Lango. Thank you, Chairman. At the outset, I welcome the bill. But if I take Chairman, the House clause by clause,
clause ZA says what is prohibited list. Prohibited list means the list of prohibited substances and prohibited methods specified by the agency by regulations. So the prohibited list itself is subdelegated to some other authority what is going to be the prohibited list. I request the government to consider and to incorporate what are all the prohibited list in the bill itself. There cannot be any subdelegation on this point, number one. Number two, ZH, clause ZH, 2ZH says, use means the utilization, application, injection or consumption by any means whatsoever by any prohibited substance or prohibited method. Now again the question comes, what is the prohibited substance? The bill is silent. What are all the prohibited substances? Like NDPS Act classifies what are all the prohibited substances. This bill is silent on what are all the list of prohibited substances and who is going to decide that. And this cannot be subdelegated to some other authority. When this house, the great parliament is deciding this house and the parliament have to decide what are all the prohibited substances, number one. Number two, if it is considered section 4, clause 4, anti-doping rule violations, it requires further deliberation into the clause 4 because the anti-doping rule or the violations of anti-doping rules is not categorically stated and it needs further deliberation by this house. If chapter 3 is taken, the national board, the constitution of national board, the qualification of the member is not given, either for the chairman or for the members of the national board is not specified in the bill. Like TROI and other commissions, medical council, the qualifications of the members and chairman are specifically stated in the bill and the act. This bill is silent about the qualification of the members and the chairman. It will lead to appointment of person by the choice of the government in power. This will take away the independency of the board itself. So there need to be a deliberation and a insertion of the qualification of the chairman and members of the national board. Then if chapter 5, class 19 is taken, where the agency has reason to believe that an athlete or athlete support personnel or any other person to whom this act applies has committed anti-doping rule violation, any person authorized by the agency may, in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, enter so-and-so, and search. Now, it is a question of using a prohibited substance in a particular game or sports. Why should authority to be given a power to enter any place of the sportsman and go and trouble him and search his place? When he is there in the ground, he has to be subjected for the anti-doping test. His house cannot be the authorities can be given a power to go and search his house or place where he is residing. This will put a great mental trauma on the sports persons. This has to be considered, number one. Number two, there is already provisions under the narcotic drugs and psychotropic substances, how this procedure of search and seizure have to be made. Prohibited substances under this bill will have a different kind of a procedure, namely criminal procedure code. So this has to be considered by the ministry and a clear-cut procedure of search and seizure have to be made. Though there is an appeal before the appellate panel is given, the recommendations of the standing committee has not been considered before drafting the bill. Number one,
anti-doping bill is the requirement of the day. It's the need of the hour. But the bill has not considered the cases where, through conspiracies, a sportsperson is made positive to this anti-doping test. There are conspiracies made to fail a person from this kind of test. There is no clause or section provided for conducting an investigation whether that sportsperson was cheated and by conspiracy was made to positive. That has to be considered. So many cases where through conspiracies sportspersons are failed in the doping test. That has to be considered, number one. And the standing committee, in its recommendation, exhaustively stated that issues to be identified in the bill, in this bill. Number one, no provision regarding the data procured by the authorized agencies, namely the personal data protection aspect of the athletes accused of doping are not taken into account. Number one. Number two, no provision for the members of the disciplinary panel or the panel or appeal panel or their removal. Third, fails to identify and make provisions in respect of applicability of the bill on foreign athletes participating in India. There is no clause in the bill about the foreign athletes who are going to participate in India. Number four, no provision regarding compensation in case of false positive tests which can harm the career of the athlete and destroy their reputation. This ministry have to definitely consider and make sufficient provisions to compensate persons due to conspiracy made false positive. Number five, seeking access to lab reports and hiring experts to interpret those reports can be expensive and time-consuming and thus affecting the athlete's career in the process. So there should be a mechanism to expedite the reports to be given to the athlete and to approach the appellate panel, and a time-bound manner of giving the decisions of the appellate panel is must. That is absent in the bill. And no provision regarding penalties to be imposed on supplement companies engaged in contamination of supplement products, which can result in potential doping. This clause or this recommendation of the standing committee has not been considered at all in the bill. So a wider consultation is required, and the recommendations of the standing committee have to be again thought of and to be incorporated in the bill. With that, I rest my case. Thank you. Thank you. माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी अल्लाह जी. Thank you, sir. I want to thank you for giving me this opportunity to speak on the National Anti-Doping Bill 2022. I would also like to congratulate Sanket Mahadev Sargar for starting off India's medal tally at the Commonwealth Games 2022 with claiming a silver in weightlifting, and fellow lifter Mr. Gururaja Pujari for winning bronze medal, as well as Saikom Mirabai Chanu, who shattered Commonwealth Games records by winning India's first gold medal. Sir, coming back to this anti-doping bill, as we are all aware, doping remains a very severe problem, with India ranking 3rd worldwide, according to the latest World Anti-Doping Agency report released in 2022, with 152 cases across different sports. Such incidents affect the morale of the sportsperson and also disappoints the aspiring athletes that view them as their idols, and it also becomes a matter of national embarrassment. Therefore, I welcome the anti-doping bill, which seeks to rectify this problem, as it is an important bill, especially
considering the ongoing Commonwealth Games and the increase in India's participation in sports inspired by our record Olympics tally last year. There are a few positives that I would like to mention here. The protection towards athletes. As use of steroids and other doping substances disqualify athletes from any competitions and ban them from taking part in any competition for a long time, washing away their immense preparative efforts while also having a negative impact on their health, even resulting in their death in certain extreme cases. A bill seeking to curb this problem is a good step toward protecting and looking after the safety of our country's athletes. The next point is inclusion of athlete support personnel. Under this new bill, athlete support personnel described as any coach, trainer, manager, agent, team staff, official, medical or paramedical personnel, or such other person working with or treating or assisting an athlete who is participating or preparing for at the national level or international level, or to which this act applies, will also be subjected to consequences of violation. Considering that there are various cases of athletes testing positive due to supplements containing contaminated substances given to them by their coach or other staff members, subjecting them to punishments or fines or other disciplinary action, will ensure more responsibility from their side as well as and may lead to a decrease in such cases. The next one is therapeutic use exemption. This bill, in accordance with the international standards for therapeutic use, shall grant certain athletes undergoing medical treatment to be allowed to take medicines or drugs included in the list of banned substances as an exemption. As sports persons throughout their career may sustain injuries that require such treatment, it is another positive addition to the bill that will allow for regulation of banned substances as part of medical treatment. Few observations, sir. I would like to put up a few of my observations. Most of the doping incidents in India are unintentional. In India, a number of athletes do not actually intend to use any enhancement drugs or steroids. However, a number of ordinary medicines that are meant to cure common pain or illness and even some daily used products also contain some amount of banned substances. A lack of knowledge regarding the presence of banned substances is the reason why most of the doping incidents in India takes place. Recent estimates project that these cases are about 12 per year. That is, one athlete per month is caught out due to not carefully checking everything that is put into their body or being appropriately educated on their rights and responsibilities. The next observation is the responsibility solely on the athletes. These regulations in the bill makes an athlete strictly liable for any banned substances entering their body, and therefore the burden of protecting their body against any such prohibited substances lies on the athlete themselves. So therefore this bill should have provisions that call for the National Anti-Doping Agency or the National Board to take responsibility for protecting the athletes from instances of accidental ingestion through proper education and also proper labeling of supplements, medicines or other products that are likely to contain these banned substances. So few suggestions, sir. Localized awareness programs. So across all the stakeholders who are part of the sports industry must be brought in, an IEC program. Information, education and communication programs must be brought in across all the stakeholders. India is, is set to adopt the international anti-doping rules
verbatim without considering some ground realities and challenges that will eventually arise. The National Anti-Doping Agency's educational programs are conventional as the language mainly used is English, which may not be easy to understand by most of the athletes coming from rural backgrounds. Owing to this, there are many cases in which athletes have taken the plea of unknowingly committing the violation due to lack of knowledge. Thus, anti-doping programs and presentations should be conducted in the vernacular language of the athlete, as it helps in acquiring them better with the technicalities of doping. The bill should also provide for a complete list of banned substances in regional languages to the athletes so that the athletes can have a better understanding relating to that. The increasing testing infrastructure. As per the NADA's regulations, an athlete is expected to conduct research before consuming any supplement. However, there is a lack of laboratories in India that carry out such specific tests on supplement, and if an athlete finds such a laboratory, the cost of carrying out the tests are high. Also, the suspension of country's national dope testing laboratory due to non-conformation to the international standards for laboratories posed additional problems for athletes, especially during the 2020 Olympics, for which they had to get tested in laboratories outside India. As NDTL was prohibited from carrying out any anti-doping activities, including all analysis Honourable of urine member, please conclude. and blood samples. The point towards the lack of infrastructure required for the proper adoption of anti-doping regulations. NDTL should be improved and more such labs should be set up in different states of India. So trained personnel also have to be brought in across various levels. Mental pressures on athletes should be brought down. So with all these things, sir, I would like to say that the sports without ethics and fair play becomes a baseless competition. Hence, we need to protect our athletes. We need to bring back the true spirit of sports, one which is not tainted with any fear of losing. With these suggestions, I support this bill. Thank you. Thank you. Shri K.R. Suresh Reddy ji. Thank you, sir. At the outset, I would like to congratulate all the sportspersons who have excelled at the Commonwealth Games, who have kept our country's flag flying high. I welcome this bill, sir, and more so feel reassured that it is being piloted by a young minister who is not only young but also very keenly involved in sports activities. So I am sure the bill and the mood of this House in their presentations would be taken in letter and spirit by the Honourable Minister. I have a couple of suggestions and a couple of queries, sir. Now, India signed this UNESCO Convention against doping in 2005 and you ratified it in 2007. Now, why has it taken almost 15 to 16 long years to bring in this bill? We've seen the other day also on Antarctica, whenever international conventions are signed, treaties are signed, and when it mandates legislation, it seems to be taking a pretty long time, and I'm not in full know-how of why the delay, but the Honourable Minister can kindly explain that, sir. There are a couple of issues relating to the bill, sir. The World Anti-Doping Code, the WADA code, as we call it, makes a very clear distinction between majors and minors. And it sets a lesser punishment for the minors. In the bill piloted by the Honourable Minister, if you see Clause 2, Subclause D of the bill, athlete is defined as any person. Now, to be more specific, the bill can contain a separate subclause under Clause 2, which defines minors as persons below the age of 18.
And further, Clause 6, which talks about the consequences of anti-doping rule violations, insert a separate provision which states that minors will be subjected to lesser punishments, like letting them off with a warning, decreasing the duration of suspension, and not basically publishing the name of such minor who has committed this anti-doping violation as under your clause 27.1. The other WADA code guidelines, sir, which talks about the significance and independence and impartiality of the National Anti-Dope Agency, the NADA. However, the way in which the current bill is structured, the central government has its own say in appointing and removing the Director General of NADA, thereby breaching the ideals contained in the WADA code. I suggest that the bill should have a provision which states explicit qualification for the Director General's appointment under Clause 15, Subclause 1, sir. Director General should be a person who excels in this activity. It should not be meant for any retired officials, or it should not be meant for any political adjustments, sir. So if the bill is very clear, it makes it easier for the government to move in that direction. And now coming to the removal of the Director General, Clause 15, Subclause 8 defines the grounds for removal as a proven misbehavior, incapacity, and then the third is such other ground. Now, the meaning of such other ground is not very clear. I suggest that the phrase such other ground be defined more specifically so as to ensure no unfettered discretion being used by the central government in the Director General's removal, sir. These are being very specific because you are reflecting the UNESCO Convention, and you emerging, India today emerging not only as a big financial strong nation, but also in the sports we are emerging as a very strong nation. So these very clear descriptions in our law makes it in tune with the various laws in other developed countries, sir. And the same analogy applies even in the disciplinary panels and appeals panel also. They face the threat of government interference. The grounds of removal are not specified in clauses 1 and 12 respectively. I suggest that these be stated in the text of the bill itself, sir. And finally, on educating the people about the demerits of doping, which spoils the athlete's career, Part 4 of the UNESCO Convention against Anti-Doping in Sports requires state parties to engage in imparting educational programs on anti-doping. It also requires states to provide accurate information on the harm of doping, to the ethical values of sports, the health consequences of doping. The government can take note of these obligations and create educational sensitization programs for the athletes. Such programs will also help prevent negligent or unknowing violations of the anti-doping bill, sir. With these, I welcome the bill, sir, and I would also like to place on record that I come from Nizamabad, where the world boxing champion Nikhil Zareen comes from. So I'm very proud that today I've been able to be part of this bill. And of course, Telangana, like rest of the country, today has been producing many wonderful sportspersons who have excelled internationally. So it is not just confined. Of course, Haryana has always been a very good example for us, inspiration for us. But today, the entire country is working on those lines. Now, keeping this in mind, the state of Telangana, the government of Telangana has also been developing and encouraging sports in a similar manner by not just through educational stuff, but also in terms of very good budgetary support. Thanks. So
I welcome the bill, sir, and I congratulate the Honorable Minister. Thank you. Dr. John Britas ji. Thank you, sir. At the outset, let me salute General D.P. Watts. He has been dispassionately objective, and he even went to the extent of proposing inter-caste, inter-religious marriages to have better breeds. I don't know whether Anurag ji would subscribe to his view, and I would say that general is different, and I would appreciate it. Sir, I really wanted to dwell on the nuances of the bill. However, many of the points which I want to speak have already been spoken here. Nevertheless, we have so much of concerns with regard to the structure and who all will be part of the board, the independence of such bodies, what could be the rules, what could be the criteria, all sorts of things actually are kept in wake. Sir, I don't want to tell about the suspension of the accreditation of NDTL, which happened in 2019. Deependra was kind enough to point out that. It was a shame for us. What would the government do to avoid such a, I would say, such an incident which made us to lose our face? Sir, we have a prominent sports person, P.T. Usha ji here. Devendra and General were lavishly talking about Haryana. They should have at least spoken about Kerala, because we have a social ecosystem whereby we promote sports. That is the peculiarity of Kerala. General Watt spoke about that. I told that he's a general with difference. He should be sitting here with us. Okay. Sir, just in July, 2 of our brilliant athletes were debarred. And sir, this bill should be providing us a window to the situation that is existing now. Our minister is ebullient, young, dynamic, though he is very active in politics also. And I would request that he should concentrate on sports a little more. As much as he is so enthusiastic about the political happenings surrounding. Sir, as we all know, sports, we have no religion, caste, creed, language, color, or sex. It is universal. In India, everyone loves sports. Everyone wants Indian sports persons to excel. But sir, a country with 1 billion plus population, we have certain achievements. Is that what is required now? Don't we need to, tread ahead, progress? And Anurag ji, just ponder over the budgetary allocations you have. You should be using your political clout to increase the allocation, which you are not doing. Actually, the budgetary allocation has gone down from 25 crores, it has gone down to 16 crores. This is the situation. And Khelo India program currently accounts nearly 30% of the sports budget. Sir, we need to have absolute increase and specific allocation to enhance the sports in this country. Sir, hardly 0.07% is the allocation. There are small countries like Romania, Latvia, etc., which allocate more funds. Please ask Ushaji, please ask her how much the sports person require. And I would request that you should consult her. Don't make us sit here alone. You should consult her on sports. You should use her talents also. Sir, I have a suggestion. The minister should take interest in such a way that a portion of the CSR earnings should be demarcated for the sports activities. That should be propagated and promoted. Sir, we have to catch our people at young age. That's how we had. Honourable member, Sir, I would just come to one or two small points more. Anurag ji, we should be perturbed over the politics that are in our sports federations. We have many federations.
How many federations have been derecognized due to mismanagement, lack of transparency, lack of corruption? Even in our Indian Olympics Association, one of your friends in BJP is fighting with another rival group. And too much of politics in sports bodies. Sir, 50% of the sports bodies are headed by politicians. Do you want to have that much of politics on sports bodies? I have no objection to Deependraji becoming a sports authority. He is passionate about sports. But think about those people who do not have any knowledge about the domain of sports, presiding over sports empires, only for narrow parochial interest. You have to have a control. I know that your limitations because some of the big wigs are presiding already over some of the sports federations. I don't want to name them, which you know that. You're smiling. Your smile gives us, obviously, an answer to the question I raised. Sir, cricket is overbearing. I have no issue. We all talk about the money they generated from the market, say about 50,000 crore. But think about other games and sports. Don't you want, we need to have a even structure in our sports culture. We don't want to neglect, we don't want to denigrate any vertical of our sports, sir. So I would request the Honorable Minister to have an awesome view. And last point, sir, sports medicine. When we talk about this doping, please understand that we got a person like Messi because his hormonal deficiency were identified when he was an adolescent. We should develop sports medicine as a counter to the doping that is happening, counter to the drugs. Thank you. And we have Ayurveda in Kerala. He just comes to meet few press persons in Kerala. He should come and meet us also. We will suggest you the ways where you can use Ayurveda to inculcate and to have sports medicine. Sir, the last point I want to make is that... Your last point was 2 points back. Last. This is last. Sir, we have spectators' interest. We should not limit the sports to be something of the spectators. We should have participatory element in sports. I would request Honorable Minister to consider these points. There are so many nuances which I wanted to dwell out on the bills, but many persons have already spoken about that. So I would earnestly urge our young minister to see that something is done spectacular. Thank you. Thank you. माननीय श्री संजय सिंह जी. धन्यवाद मान्यवर, आपने इस एंटी डोपिंग बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया. मान्यवर, जब हम लोग आज इस बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है कि अपने जमाने की उड़न परी जिसको कहा गया और जो इस समय इस सदन में है पीटी उषा जी, उनका भी हम सारे लोग अभिनंदन करते हैं उनके रहते हुए इस बिल पर चर्चा. मान्यवर, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो जब हम इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी जिनकी गुगली से अच्छे विकेट गिर जाते थे, हरभजन सिंह जी भी हमारी पार्टी के राज्यसभा के सांसद. मान्यवर, ये बिल हम सब के लिए दूसरा गेंद उनकी फेमस गेंद हुआ करती थी हरभजन सिंह जी जिसका जिक्र कर. तो मान्यवर, अनिल कुंबले की भी गुगली याद कर. नहीं, सबकी है. हमने ये कहा कि हमने अपनी पार्टी की ओर से राज्यसभा के सदन में हमने लाने का काम किया. मान्यवर, ये बिल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक अच्छी बात इसमें लगी कि बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया, उसके बाद जनता से राय मांगी गई, उसके बाद लोकसभा के पटल पे लाया गया और अब राज्यसभा में चर्चा में आया है. बहुत अच्छी बात है कि सघन रूप से इस बिल के ऊपर चर्चा करके कई स्तरों पर उसके बाद यह बिल लाया गया है. और जब डोपिंग टेस्ट में लोग पॉजिटिव आने के बाद उनका कैरियर चौपट होता है तो बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन बन जाती है. उनको खेल की प्रतियोगिता से वंचित तो रखा जाता है, लेकिन उसकी टेस्टिंग सही थी या गलत थी, उसके साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ,
इसके बारे में फिर पूरे जीवन भर उसके बारे में कोई सोचता नहीं, पूछता नहीं, और उसको हमेशा खेल बिरादरी और राष्ट्रीय स्तर पर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है मान्यवर। और इसमें सबसे ज्यादा जो मामला मुझे याद है मान्यवर, वह हमारे युवा होनहार पहलवान नरसिंह यादव का मामला मान्यवर। हिंदुस्तान से डोपिंग टेस्ट पास करके गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक के खेल में उनको फेल कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस बिल से अब ऐसी घटनाओं से हमें मदद मिलेगी जहां पर राष्ट्रीय स्तर से खिलाड़ी पास होकर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नाडा से पास होकर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में जाता है और वहां उसको फेल करके पीछे कर दिया जाता है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। देश के हित में है, अच्छा है, खिलाड़ियों को इससे सुरक्षा मिलेगी। लेकिन यहां चिंता व्यक्त की दीपेंद्र हुड्डा जी ने, यहां चिंता व्यक्त की सदन के दूसरे हमारे माननीय सांसदों ने, कि ये कई बार ये डोपिंग के चक्कर में लोग फंसते क्यों हैं। खिलाड़ी अतिरिक्त ताकत लेने के चक्कर में फंसते हैं। वो अतिरिक्त ताकत लेने की सोच उनके मन में आती कहां से है? क्योंकि जब वो मेडल की रेस में जब पीछे होते जाते हैं, सोचते हैं चलो किसी तरीके से मेडल हासिल करते हैं। लेकिन कई बार उनके साथ साजिश भी होती है। उनके साथ जो टेस्ट होता है, ऐसे इंजेक्शन जानबूझ के उनको दिए जाते हैं जिससे वो टेस्टिंग में फेल हो जाए। और इसलिए इस बिल का होना बहुत आवश्यक है कि ऐसी तमाम साजिशों पर, ऐसी तमाम कार्रवाइयों पर और ऐसी टेस्टिंग कर करके जो हमारे खिलाड़ियों को पीछे रखा जाता है, उससे उनको बचाया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ क्या खेल के प्रति हमारी सरकार का ध्यान है मान्यवर? यहां माननीय मंत्री जी बैठे, मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे पूछना चाहता हूं, 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में आप अच्छे खिलाड़ी कैसे बनाएंगे जब आप खेल का बजट मात्र 3000 करोड़ रुपए रखते हैं? 3000 करोड़ रुपए का बजट आप 130 करोड़ की आबादी में रख रहे हैं। और 2021 में आपने खेल का बजट कम किया, इस बार थोड़ा बहुत आपने बढ़ाया। तो खेल को इतने उपेक्षा भाव से क्यों देखा जाता है? खेल के ऊपर हमारा बजट क्यों इतना कम रहता है? खेल की तरफ हमारी सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? और जब आज एंटी डोपिंग पे आप चर्चा कर रहे हैं मान्यवर, पूरा देश हम लोगों को सुन रहा होगा और खास तौर से हमारे वो नौजवान सुन रहे होंगे जो हरियाणा के गांवों में, उत्तर प्रदेश के गांवों में, बिहार के गांवों में, पूरे देश के अंदर दिन रात सुबह 4 बजे उठ के शाम तक मेहनत करते थे कि उनको देश की सेना में भारत के लिए मरने मिटने का मौका मिलेगा। उनको भी आपने बगैर डोपिंग टेस्ट के फेल कर दिया। उनको तो बगैर डोपिंग टेस्ट के आपने फेल कर दिया। भारत की सेना में जिनके मन में जाने का जज्बा था, यह अग्निवीर योजना लाके, यह 4 साल की योजना लाके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया आपने। मान्यवर, मैं आप लोगों से, आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, कभी आइए देखिए और खेल को बढ़ावा कैसे दिया जाता है। खुले मन से आइए खेल मंत्री जी, चलते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, जहां अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल का निर्माण किया है। सरकारी स्कूलों के अंदर हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं, एथलीट के ग्राउंड बनाए हैं, वर्ल्ड क्लास हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं, जहां पर बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन तैयार करने के लिए मिशन एक्सीलेंस की योजना दिल्ली की सरकार लेके आई। और केजरीवाल जी की सरकार कहती है खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा मदद, आर्थिक मदद की जरूरत तब होती है जब वो उसकी खेल की प्रतिभा को निखारना होता है। आप मदद कब करते हैं? कोई ओलंपिक में गोल्ड पा गया, कोई सिल्वर पा गया, कोई एशियाड में मेडल पा गया, उसके बाद कई राज्य सरकारें उसके पीछे कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़ के सहयोग देने के लिए होड़ लग जाती है। लेकिन जो खिलाड़ी संघर्ष कर रहा होता है मान्यवर, जो खिलाड़ी मेहनत कर रहा होता है, जिसके खेल में प्रतिभा है, जो ओलंपिक में गोल्ड पा सकता है, सिल्वर पा सकता है, ब्रॉन्ज पा सकता है, जो एशियाड में मेडल पा सकता है, उसकी मदद करने के लिए क्या योजना है? ये योजना दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लेकर आई। और मिशन एक्सीलेंस में हम दिल्ली के खिलाड़ियों को, प्रतिभावान खिलाड़ियों को, जिनके अंदर संभावना है
खेल के अंदर बड़े बड़े खेल प्रतियोगिताओं में मेडल पाने की, उनको 16 लाख रुपए तक की सालाना मदद करते हैं मान्यवर, 16 लाख रुपए तक की। और दूसरी दिल्ली सरकार की योजना है मान्यवर, प्ले एंड प्रोग्रेस की योजना, प्ले एंड प्रोग्रेस की योजना। इसमें ऐसे बच्चों को हम लोग तैयार करते हैं जो आगे चल के अपने बचपन से ही खेल के अलग अलग खेलों में जिसमें उनकी विधा है, जिस खेल में वो अच्छी प्रतिभा रखते हैं, उनको मदद करके उनको आगे बढ़ाना और उनको मेडल के लिए तैयार करना, उनको बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना। और दिल्ली की सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई सर, खेल का विश्वविद्यालय। और ये अपने आप में एक ऐसा अनोखा खेल का विश्वविद्यालय है जहां खेल को ही उसकी पढ़ाई मानी गई है, खेल को ही उसकी डिग्री मानी गई है, खेल को ही उसका जीवन माना गया है। वो अलग अलग खेलों में जिसमें भी वो जाना चाहता है, उसके खेल के हिसाब से उसको स्टेडियम उपलब्ध कराया जाएगा, उसको मदद की जाएगी और उसको हॉस्टल की सुविधा, खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, खेलने की सुविधा, उसके खेल की प्रतिभा को ही उसको डिग्री माना जाएगा। ऐसा खेल का विश्वविद्यालय दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल जी की सरकार ने बनाया। तो इसलिए मान्यवर, हमने दिल्ली के अंदर खेल को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मैं फिर से आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करते हुए सरकार से अनुरोध करूंगा, हमारे खेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये जो खेल का बजट है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है, इस बजट को बढ़ाइए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अर्जुन अवार्डी हैं, जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, जिनको बड़े बड़े मेडल मिले हैं। ऐसी कहानियां पढ़ने को मिलती है कि वो अपना मेडल बेच के कहीं मूंगफली बेच रहे हैं, कहीं चाय की दुकान लगा रहे हैं, कहीं ठेला लगा रहे हैं, कहीं सब्जी बेच रहे हैं। ये जो खबरें आती हैं मान्यवर, ये दिल को दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां की आबादी 24 करोड़ की है और उस 24 करोड़ की आबादी में मान्यवर, जब हम पढ़ते हैं ओलंपिक का मेडल, एशियाड का मेडल, कॉमनवेल्थ का मेडल और उसमें हमारे प्रदेश का नाम नहीं होता, तो हमें तकलीफ होती है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि खेल की ओर ज्यादा ध्यान दीजिए, खेल का बजट बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। थैंक यू मिस्टर संजय सिंह जी। नाउ श्रीमती पीटी उषा। प्लीज 238. 238. Yeah. A member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. Yeah. He was referring about Agniveer and Agniveer matter is pending with the Supreme Court. So मैं आग्रह करूंगा कि इसको नहीं है, वो सब जुडिस है, वो मामला। Please. सर सुशील जी, no. ये मामला Please कोर्ट sit में down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Yes, raise the point of order. You please sit down. Sir, it is very clear, sir. Kindly sit A down. member while speaking shall not refer to any matter of fact Sushil ji, on please. which a judicial Sushil ji, decision you is need not pending. repeat. It will be examined by the chair. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Excuse me, you please sit down. You please sit down. One more. Minister. Sir, I didn't want you to intervene. I'll reply in detail later. But I just wanted to apprise the House because the Honourable Member right now mentioned about Uttar Pradesh. I just want to say, इस देश में केवल एक राज्य ऐसा है जिसने अपने ही राज्य के एथलीट्स को टोक्यो ओलंपिक्स के बाद सम्मानित नहीं बल्कि देश भर के जितने एथलीट्स मेडल जीत कर आए थे उन सबको सम्मानित करने का काम किया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी ने करने का काम किया है। तो ये हाउस पे थोड़ा रिकॉर्ड स्ट्रेट रहे, मैं सारे बातों का उत्तर बाद में दे दूंगा, मुझे उसमें कोई चिंता संकोच नहीं है। Thank you. Srimati P.T. Usha. Please. Respected Honorable Chairman, sir. Honorable Vice Chairman, sir. My most respectable gurus, mentors, and fellow members of this august house,
as today is my maiden speech. I hope you consider me as your humble sister, and I also hope you will forgive me for any mistakes in my speech. Sir, with all your blessings, let me begin my speech by paying homage to all our freedom fighters, our soldiers, policemen, and all the great noble-hearted individuals who had laid down their lives for our nation. It is because of their sacrifice and everyone who are in service of our nation that we are now living a loving and peaceful life. It is because of their service that has made the very foundation of this great nation that we are able to enjoy the freedom which is given to us, and hence we also have commitment towards our nation. As nominated Rajya Sabha member at age of 58, I am grateful for the good fortune of taking my first step in the temple of democracy. I took oath on 20th July in the name of God to uphold the constitutional values, and all those days, like a grade 1 student, I have been watching the proceeding of this sacred house. I also had the great opportunity of representing my country in more than a few hundred events as part of my sports tapasya. I would like to look at the democratic process of post-independent India through the open eyes of an athlete. Since independence, we have been providing various facilities for improving our sport. Our proud sports personalities have achieved rare achievements in hockey, wrestling, and football at Olympics venues. Our sportsmen have several achievements that inspire the younger generations in athletics, tennis, and other sports. Hockey legend Dhyan Chand and his team, Mevalal ji in football, K.D. Yadav ji in wrestling, Ramanatha Krishnan and Amritraj brothers in tennis, the mighty Milkha Singh ji in athletics, and though India's first female Olympian Mary D'Souza ji. All of them are our true legends. We have achieved great feats in 1980s, but later on, unfortunately, we lost the upper hand in hockey, football, and wrestling. With the 1983 World Cup trim, the prestigious of our nation in the field of cricket has risen once again, such that we were the world champions in another major sporting event after hockey. In the 1960 Rome Olympics, we lost the medal of Milkha Singh ji by fraction of a second, and it was repeated once again in 1984 with a difference of 1/100th of a second. Thereafter, me being a girl from the remote place of Payoli in Kerala, a village without any facilities to pursue my sporting dreams, met the spoke for the first time to the then Prime Minister, late Srimati Indira Priyadarshini ji, which was of the most precious moment of my life. Then, by running up to year 2000 and training my younger generation till yesterday, this devotee has dedicated herself to the betterment of sports, Indian sports, and once again had the rare privilege of meeting Honorable Sri Narendra Modi ji, the most admired Prime Minister among the world nations. All the while we can count the achievements of our nation in the field of sports since 1984. We embraced the sports as a self-criticism as there was no overall growth. I wish to mention that our achievements in athletics, tennis, weightlifting, cricket, chess, billiards and snooker, badminton, boxing events are huge. From the time when our beloved Vajpayee ji became the Prime Minister until 2014, only a few silver stars were seen performing at bigger stages. In terms of infrastructure developments, in addition to things such as training grounds, conditioning facilities, and improved diets, better treatment facilities were not adequately available then until come 2014. In the 1980s, I used to travel from Payoli by train for up to 4 days to reach Delhi to work out on athletic tracks. But now I am happy to state that after 2014, our country has been making enviable progress in various fields, including unparalleled achievements in field of sports.
and that is why today's generation and experiencing district to district better training facilities in varieties of sports. Facilities such as synthetic tracks, swimming pools and gymnasiums and other amenities are being made readily available. The new generation sportsmen are now getting better coaches, scientific diets and resting facilities. But there is one department which needs more emphasis, and that will be the field of sports medicine and sports science. The front-running top 10 nation in the field of sports and Olympic has backing of modern sports science technology and support of sports medicine system. Injuries are an inseparable part of the sports, and the Department of Sports Science and Sports Medicine has an important role to play in helping sports personalities recover from injuries as fast as possible in bringing them back to training in a short period of time. Unfortunately, in our country, this branch is still in its infancy. We need to have immediate and special attention to this sector. This is the time to become self-reliant, and in those terms, I strongly suggest that sports science, sports medicine and coaching should come under the scheme of our beloved Prime Minister, Sri Narendra Modi ji's dream project, Atma Nirbhar Bharat. Now, all this has been mentioned only as an introduction, but on the contrary, over the past 20 years, there has been general tendency towards doping, or what we can call as an abuse of performance-enhancing drugs and steroids. According to today's statistics, India ranks third in the number of individuals who have been tested positive for steroids and punished for doping. In this context, the nation which is ranked 1 in the number of individuals tested positive for steroid has already been excluded from the world sports by other countries. I wish to mention that this serious concern which need to be addressed immediately. We are yet to open our eyes to abuse of doping in our country, which was once earlier confined only to the senior national levels, has now reached the juniors, college and school level, which is serious concern that need to be addressed. When talented sports individuals are abusing performance-enhancing drugs, they are not only sacrificing their career and life for short-term benefits, but they are also spoiling the talents of upcoming sports individuals who work very hard to improve their performance levels. In addition to, they are also tarnishing the image of our country among other nations, and through this, we are also destroying the dignity and legacy of our ancestors that worked very hard for it. To control this alarming situation, with the special interest of our sports minister, the Lok Sabha has passed the anti-doping bill last week. While this phenomenon can be controlled to some extent through legislation, yet still more effective measures are impressive and needed to be taken. We should create awareness about the abuse of performance-enhancing drugs in sports among athletes, coaches and parents, and there should be no delay in taking timely action and appropriate ban against those who test positive of doping. At the same time, the activities of National Anti-Doping Agency, NADA, should be accelerated and should be given the freedom to operate without any other obstacles. National Anti-Doping Agency and the National Dope Testing Laboratory in New Delhi should get necessary financial freedom, and all competition must be brought under the watchful eye of NADA. And not only for the competition, but also for the preparatory time also should be tested. For instance, in a competition with the participation of 800 athletes, the NADA authorities are used to come up with just 10 anti-doping kits, and it can be undoubtedly said that such measures are happening because of the financial constraints and lack of adequate manpower. It is only through the timely interventions of our legislatures, state these people and the people of representatives who should be more assertive regarding matters related to sports and should be every means ensure that a better,
opportunity is created for our sports individual to showcase their true talent and potential among world nations. If the motto prevention is better than cure is implemented scientifically and educatively in the field of sports, and we as a nation which has always dreamed big and hoped good for our people, I can indefinitely say that in the next 10 years, we will become one of the top 10 sporting superpower among the countries of the world. I wish to mention that we have reclaimed the Olympic medal in 2020, which we had previously missed in 1960 and 84. Now let us give support to our upcoming sport talent by all means and respect so that they can compete vigorously in the upcoming Olympics and World Championships and win with the flying colors so that millions of Indians living in other countries and our Bharat can stand with their heads held high. Today's faith is the strength of tomorrow. On this note, let us all work for the betterment of new and strong India. Let me conclude my speech by extending my heartfelt gratitude to our beloved Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, who is very keen on development of sports in country. As a daughter of Bharat Mata, I bow my head before her and wish that I could serve this nation for the betterment of sports. Thank you, Honorable Chairman, who gave me this opportunity. I thank everyone once again from the bottom of my heart. Namaskar. Thank you, Srimati Piti Usha. Now, Dr. Fausia Khan, 4 minutes. Why 4 minutes, sir, to me? Members or more. Anyway, thank you very much. Sir, I would like to begin by first welcoming this bill and saying that my family is a great fan of Sachin Tendulkar and Sunil Gavaskar, sir. Like millions of other families in our country and even outside our country, particularly the youth, not because they have been successful sports persons, but simultaneously also because they are icons and an inspiration of what the field of sports has groomed them into as human beings: righteous, disciplined, determined, humble, punctual, hardworking, unbiased men of integrity. So generally people thrive to become like their ideals and adopt their ways of life. The current expansion of the field of sports itself may be attributed to this idealism. There are thousands of such icons who are role models for the youth. Sports is a field that inspires love, affinity, and brotherhood. And the general behavior of great sportsmen impacts the way our youth think or perceive life. While discussing this bill, this must be kept in mind that while addressing the issue of doping in sports, we are also trying to address the value system in our youth. Sir, righteousness has always been a part of Indian tradition. I think most misguided sports persons are not introduced to doping when they reach international level, but they are introduced to doping much earlier, when they participate in state or national level competitions. And that is where our focus must lie. This is necessary. Therefore, I thank the Minister for having brought in this comprehensive bill, which covers not only sports, but also gives a message that values matter, not only for the youth of India, but also to the global community. So the growth of sport is a definite indicator of the growth of the nation. I must congratulate our young Minister, Anurag Thakurji, for his vision, dedication, and contribution, and for the fact that we are winning medals after medals in various competitions during these days. The bill, I think, is well framed, but it is evident that scope has been voluntarily left for the rules and regulations. I have some suggestions that could be incorporated by the Minister. Enhancement drugs like amphetamine and steroids have been evolving even from before the 1940s.
with the evolution of the pharmaceutical industry, and rules and regulations also have been simultaneously evolving. Also, sir, changes are coming in accordingly in the World Anti-Doping Code. At the same time, masking drugs are also being developed in the natural course of evolution. Therefore, as I think you have thought about, awareness programs are very, very important. They are already being carried out, but many more are needed. Sir, I'll just give my pointers because I have less time. I feel that we need to carry these awareness programs at all levels, not just at national or international level, but state level, district level, down the line, because that's where the program begins. And we have a very well-established network in the nation. This network is the associations, the federations, the clubs. I think they should be included in this because this network percolates down to the taluka level, sir. So before every competition, a session and a certification on anti-doping must be made mandatory as a precursor for the permission of the competition to the association, sir. If that is done, the association becomes accountable to ensure that awareness for anti-doping is carried out by them. Also, sir, screening. Screening is not only necessary at the international level, but also down the line to the district level. So just give me 1 minute. Because you have mentioned a big lab which is worth crores of rupees, but what we need are little micro labs, mobile labs, or like simple glucometers that we have to check our sugar. In the same way, if we can screen out doping at the little lower level, that would be, and if made mandatory for the associations, this would produce very good results. So guidelines must be circulated. Accountability of coaches, accountability of associations have to be ensured, and we have to be, looking at the last point is that off-the-shelf drugs that are available, especially the powders, the proteins, the whey proteins that are available in the for the gyms, sir. Sir, I think the performance enhancers, the dietary supplements, all this should be looked into. I have much more to say, sir, but I will only end by saying that, where there is a computer, if you detect the virus, detection is not our aim. You may detect the virus, but the virus has to be cured, and that cure has to be our aim. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Dr. Fausia Khan. Through G.K. Watson. Sir, the bill proposes the amendments in accordance with the World Anti-Doping Agency Code. 2-3 short points, sir. One, the personal data protection of athletes who are suspected of illegal possession, use of trafficking of drugs is missing factor which has to be looked after by the Honorable Minister. Because if they are suspected and later proved innocent, their privacy remains violated and they suffer social stigma. Therefore, I request the Honorable Minister to kindly look into this important aspect. Number two, sir, there are many instances when athletes have tested positive for banned drug use for no fault of their own. Sometimes they are found to have taken those drugs as part of their regular medicine prescribed by their own doctors. Sometimes the drug from their nutrition supplements. Sir, I feel the need to create proper awareness among sportspersons, coaches, doctors who specialize in sports medicine and other stakeholders to doubly check what medicine and nutrition supplements they take. Another important point, sir, the World Doping Code states that the protected class of athletes, which includes
athletes below 16 years of age, among others, may be given reduced penalties, punishments or ban periods. This bill does not make any distinction, sir, between minor and major athletes. I hope when the minister takes care of it while framing rules under the Act, this will be definitely taken into care. Regarding the laboratories, sir, there is a need for setting up laboratories in each state. It is a welcome suggestion and will go a long way in speedy disposal of cases. I urge the minister to take this suggestion because a large number of younger people today in the country are taking up sports as a career and way of life than a hobby or a part-time occasion. Sir, to conclude, we are already seeing the results of various initiatives taken by the minister under the guidance of our Honorable Prime Minister in the form of Khelo India and other schemes for promotion of sports, fitness and healthy awareness in the country. The results of medal wins from our World Athletic Championship and